Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have done some questions regarding exercise 11.3 and that's actually regarding a plane. So in that exercise we are on question number 5 and in that question number 5 we have to actually find the equation of a plane which is passing through a point and is perpendicular to a vector. So since this is passing through a point means we have to locate its equation both in vector as well as in Cartesian form in one point form of equation of plane. So it is given that the plane is passing through a point having coordinates 1 0 1 0 minus 2 and it is normal to the vector I plus j minus k. So the plane is passing through the point 1 0 minus 2 and the vector which is perpendicular to the plane is I plus j minus k. So suppose this is vector n and the position vector of this point which is denoted by a vector, a must be I plus 0j minus 2k. So we have to locate the equation of that plane which is passing through a point and perpendicular to the vector I plus j minus k. Means we have to actually locate the one point form of equation of plane. And the one point form of equation of plane in vector form is r vector minus a vector dot n vector is equal to 0. Where r vector is the position vector of any point lying on the plane, a vector is the position vector of given point through which the plane passes, and n vector is that vector which is normal, which is perpendicular to the plane. So यहाँ पे mention कर देंगे given a point given a plane passing through the point, एक point में से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 0 माइनस 2, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, वेक्टर फॉर्म में हमें इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए. सो विथ दिस पोजीशन वेक्टर एज इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा एस विथ दिस पोजीशन वेक्टर एज जिसको हम ए से डिनोट करेंगे एंड दैट्स आई प्लस 0j minus 2k because it is passing through the point 1 0 minus 2. So its position vector must be I plus 0j minus 2k. And the normal to the plane is जिसे हम suppose n से denote करेंगे and that's I plus j minus k. So we have located the value of a, we have located the value of n. We are going to substitute these two values in the equation and that's a one point form of equation of plane. Therefore, equation of plane in one point form is, या in पहले vector form करेंगे. Therefore equation of plane in vector form is, तो क्या होती है one point form vector form में of a plane, that is r vector minus a vector dot n vector is equal to 0, which further implies that r vector is r vector minus times, put the value of a vector, what is that? That is I plus 0j minus 2k और इसका डॉट करना है किसके साथ? डॉट n वेक्टर दैट इज I plus j minus k and that's equal to 0. We will keep this equation as equation number first, which is the required equation of plane in vector form. So which is the required equation in वेक्टर फॉर्म? तो ये बन गई इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म जो पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट 1 0 माइनस 2 एंड जिसपे एक नॉर्मल है, जिसपे एक परपेंडिकुलर है, जिस एक वेक्टर है जिसका एक्चुअली स्ट्रक्चर है I plus j minus k, right? So this would be the required vector equation. Now from the vector equation we will deduce the Cartesian equation of this plane. तो वेक्टर इक्वेशन में से कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. That is we have to put the value of that r vector. R vector is the position vector of any unknown point.
unknown point has the coordinates x, y, z. So r vector must be then equal to xi plus yj plus zk. From equation first we have r vector, क्या है equation first, minus I plus 0j minus 2k, और इसका डॉट करना है किसके साथ, I plus j minus k is equal to 0, which further implies that put the value of r vector. R vector is the position vector of unknown point x, y, z. So position vector must be xi plus yj plus zk minus times I minus times 0j प्लस टाइम्स 2k, और इस वेक्टर का फिर डॉट करना है किसके साथ, I प्लस j minus k, and that's equal to 0. Is that clear? So implies this can be written as y, because r vector is equal to xi plus yj plus zk, as r vector is the position vector of unknown point xyz. If it is coordinates are xyz, the position vector must be xi plus yj plus zk. So which further implies that this can be written as, yes, this is xi and this is minus I और I को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x minus 1. So x minus 1 into I, yes, yj minus 0j, that's again plus yj, and zk plus 2k, k और k को कॉमन ले लो तो z plus 2, so plus z plus 2 into k, और इस वेक्टर का डॉट करना है किस वेक्टर के साथ, डॉट विथ, यस, I plus j plus k, so I plus j minus k, and that's equal to 0. Now you have two vectors, one is x minus 1 into I, yj z plus 2 into k, and another vector is I plus j minus k, and you need to find their dot product. The dot product of two vectors when they are expressed in terms of their components, किसके बराबर होगा, sum of products of their corresponding scalar components. So implies this can be written as x minus 1 into 1, so x minus 1 into 1 plus y into 1, so that is y into 1 plus z plus 2 into minus 1, so z plus 2 into minus 1, and that's equal to 0. Solve this equation implies we get x minus 1 into 1, that's x minus 1 plus y into 1, that's y, plus z plus 2 into minus 1, that's minus z minus 2, and that's equal to 0, which further implies that this can be written as x is x plus y is plus y minus z is minus z. Now minus 1 or minus 2 कितने बनेंगे, minus 3 is equal to 0. So x plus y minus z minus 3 is equal to 0 would be the required equation of the plane in Cartesian form. So which is the required equation of plane, which is the required Cartesian equation of the plane, which is the required Cartesian equation of the plane. तो ये बन गई यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है, दैट्स एक्चुअली द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और ये इक्वेशन जो है दैट्स एक्चुअली द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो हमें निकालनी थी एक प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट में से पास हो रहा है और जिसपे एक वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो हमने यूज कर दी वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले वेक्टर फॉर्म के लिए और फिर इसी वेक्टर फॉर्म में से निकाली इसकी कार्टेशियन फॉर्म. सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. ये एक्चुअली इसका ए पार्ट था, तो इसका बी पार्ट भी जो है बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है और ये वेक्टर एंड डिफरेंट है. तो फिर से आपको चाहिए वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर. तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, just the mirror image of this part. So you can do that by yourself. So that was all about question number 5 of this exercise. Now we are on question number 6 of the same exercise, and in that question number 6 we have 3 given points: 1 1 minus 1 6 4 minus 5 minus 4 minus 2 and 3, and it is given that the plane is passing through these 3 points, and we need to calculate the equation of a plane which is passing through 3 given points, right?
तो क्या होती है उस प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है? डिड्यूस किया है हमने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स. यस, क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. So the equation of a plane which is passing through 3 points x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3 is actually x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. This is actually the equation of a plane which is passing through 3 given points. Now the 3 given points are there and you have to substitute the value of x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 in the given equation. We will get the required equation of a plane. सो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है. 3 पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं एंड यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स. सो गिवन दैट a plane passes through the points, given that a plane passes through the points, एक प्लेन पॉइंट्स में से पास हो रहा है. कौन कौन से पॉइंट्स? 1 1 minus 1, 6 4 minus 5 and minus 4 minus 2 3. It is given that a plane is passing through these 3 points and we need to calculate the equation of that plane. Therefore equation of required plane is, तो जिगर क्या होती है उस प्लेन की इक्वेशन जो 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है? दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 minus y1, z3 minus z1 and that's equal to 0. Is that clear? So this can be further written as implies determinant of x minus, what is x1? That's 1. Y minus y1, that is again 1. Z minus z1, that is z minus z1. Minus into minus will become plus, so z plus 1. x1, y1, z1 are the coordinates of first point, x2, y2, z2 are the coordinates of second point and x3, y3, z3 are the coordinates of the third point. The respective abscissa, ordinate and applicates of the points, right? So implies now x2 minus x1, what is x2? That is 6 minus 1, 6 minus 1, y2 minus y1, 4 minus 1, so 4 minus 1, z2 minus z1, so minus 5, minus minus 1 means plus 1. Now next we have x3 minus x1, minus 4 minus 1, so minus 4 minus 1, y3 minus y1 means minus 2 minus 1, so minus 2 minus 1, z3 minus z1, so that is 3 minus into minus is plus 1 and that's equal to 0. Is that clear? Implies this can be written as determinant of x minus 1, y minus 1, z plus 1, 6 minus 1 is 5, 4 minus 1 is 3, minus 5 plus 1 is minus 4, minus 4 minus 1 is minus 5, minus 2 minus 1 is minus 3 and 3 plus 1 is 4 and that's equal to 0. In the LHS we have a determinant and that's the determinant of square matrix of order 3 by 3. Can be evaluated by the method of expansion which is familiarly known as Laplace expansion. So apply Laplace expansion to this determinant and expand it with the help of rho first. So implies this can be written as expanding the determinant with the help of first row. So first row में पहला element that is x minus 1 into, yes, lies in first row first column, delete that, 3 4s are 12, so that's 12. And minus into minus is plus, plus into minus is again minus, and again 3 4s are 12.
दूसरी टर्म जो है वो माइनस आएगी, वो y माइनस वन है, तो बनेगा माइनस टाइम्स y माइनस वन इंटू, यस, lies in first row second column, delete that, 5 4s are 20, so that is 20, right? 5 4s are 20, minus into minus is plus, plus into minus is again minus, 5 4s are 20, so 20 minus 20. Is that clear? Now third term is plus, so plus z plus 1 into z plus 1 into the z plus 1 lies in first row third column, delete that, 5 into minus 3, that is minus 15, and minus 5 into 3, that is minus into minus, that is plus 15, and that's equal to 0. Is that clear? So implies, देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगी जिगर? 12 minus 12 0, 0 into x minus 1, that is 0, 20 minus 20 0 into y minus 1 0, minus 15 plus 15, that is 0, 0 into anything is 0, so 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. So हमें इक्वेशन एक्चुअली क्या मिलेगी? 0 is equal to 0 मीन्स हमें कोई प्लेन नहीं मिलेगा, तो that is such kind of plane which is passing through these 3 points does not exist. So यहां पे मेंशन कर देंगे, that is such kind of plane, that is such kind of plane which is passing through, such kind of plane which is passing through, yes, 1 1 minus 1, 6 4 minus 5, and minus 4 minus 2 3 does not exist. सो ये पॉइंट्स जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह दे रखे हैं कि कोई भी ऐसा प्लेन एग्जिस्ट नहीं होगा जो इन 3 पॉइंट्स में से पास होगा, बिकॉज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स भी होता है, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन होता है, इन टर्म्स ऑफ जेड अलोन होता, तब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनता. लेकिन हमारे पास एलएचएस में भी 0 है, आरएचएस में भी 0 है, सो वी हैव गॉट अ ट्रू इक्वेशन. It's actually a true equation which does not contain any variable x, y and z. So इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं होगा. So such kind of plane which is passing through these 3 points does not exist. Is that clear? So next, this was part A and next you have part B. बिल्कुल इसी तरह है, just the mirror image of this one. Again you have 3 given points and you need to calculate the equation of plane which is passing through them. So again you have to use the formula, determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0. यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिली, मे बी वहां पे आपको कोई इक्वेशन, वेल डिफाइंड इक्वेशन मिलेगी, तो उस समय वही इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट question number 6 of this exercise. Now we are on question number 7, and in that question number 7 we have, so question number 7 is there, and in that question number 7 we have the given equation, that is 2x plus y minus z is equal to 5. It is the equation of a plane and we need to find the intercepts cut off by the plane along the axis. यानी ये जो प्लेन है ये कौन से इंटरसेप्ट कट कर रहा है along axis. So for that we have to change this equation into the intercept form, and the intercept form of equation of plane is actually x divided by a plus y divided by b plus z divided by c is equal to 1. This is actually the intercept form of equation of plane. While x, y and z are the coordinates of any unknown point lying on the plane, a, b and c are the intercepts cut off by the plane. A is the intercept along x-axis, B is the intercept along y-axis, and C is the intercept along z-axis, right? So first we have to change this equation into the intercept form. So the given equation of plane is, question number 7 में, the given equation of plane is, yes, what is the given equation? 2x plus y माइनस z इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में.
तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? यस, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. Means in the RHS instead of 5 we should have 1 there. तो 5 के बदले यहां पे 1 आना चाहिए. कैसे आएगा? हम डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड्स बाय 5. सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 वी गेट. थ्रू आउट डिवाइड कर दो 5 से तो क्या मिलेगा? 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 माइनस z डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 5, दैट्स इक्वल टू 1. तो मिला हमें आरएचएस में क्या? 1. बट हमारी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? x बाय a. यहां पे 2x बाय 5 है तो 2 को भी टू यहां पे न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, इसको लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में. कैसे? implies this can be written as x divided by 5 by 2, right? क्योंकि ये 5 by 2 है, अगर मल्टीपल में लेके जाएंगे तो 2 by 5 बनेगा, तो 2 को मल्टीपल होगा फिर से x से, प्लस y डिवाइडेड बाय 5, इसको ऐसे ही रख लेते हैं y डिवाइडेड बाय 5, और प्लस यहां पे लिख सकते हैं प्लस z डिवाइडेड बाय माइनस 5, क्योंकि प्लस आप माइनस न्यूमरेटर में लिख दो या डिनोमिनेटर में लिख दो, एक ही बात है, एंड दैट्स इक्वल टू 1. अब ये इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b प्लस z डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये? x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b प्लस z डिवाइडेड बाय c एंड दैट्स इक्वल टू 1. But that equation of plane is actually called the intercept form of equation of plane. तो a, b and c क्या होते हैं? इंटरसेप्ट्स. यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 5 by 2, b का वैल्यू क्या है? 5, और c का वैल्यू क्या है? -5. इसलिए ये प्लेन जो है ये इंटरसेप्ट कट करेगा along the coordinate axis. क्या क्या? 5 by 2, 5 and -5. Therefore, the intercepts cut off by the plane along the coordinate axes are respectively, कौन कौन से होंगे? along x axis जो हो ये इंटरसेप्ट होगा, that is 5 by 2. so 5 by 2. along y axis होगा 5, so 5, and along z axis होगा -5. So 5 divided by 2, 5 and -5 would be the intercepts cut off by the plane 2x plus y minus z is equal to 5 along the coordinate axes respectively. So that was all about question number 7 of this exercise. Now we are on question number 8 of the same exercise, and this is very much important as for these questions of the exercise are concerned, as far your examination is concerned. This is very much important question. Here you have to locate the equation of that plane which is parallel to ZOX plane and which cutoff intercepts 3 along y axis. तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए, वो प्लेन ZOX प्लेन और वो प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन और ZOX प्लेन आपस में पैरेलल हैं, और क्या दे रखा है कि वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो कट कर रहा है इंटरसेप्ट 3 along y axis. इंटरसेप्ट 3 along y axis वो कट कर रहा है, और वो प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज पैरेलल टू ZOX प्लेन. तो कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन, राइट? फिर उस इक्वेशन में निकालेंगे उसके एटीट्यूड नंबर्स. तो नाउ ZOX प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन आपस में पैरेलल हैं, तो जो एटीट्यूड नंबर्स ZOX प्लेन के होंगे वही एटीट्यूड नंबर्स रिक्वायर्ड प्लेन के भी होंगे. तो इसका मतलब अब ये ZOX प्लेन जो है ये पास हो रहा है या ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है 3 along y एक्सिस. जब ये 3 इंटरसेप्ट y एक्सिस along कट कर रहा है तो इसका मतलब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0, यानी ये पास होगा थ्रू द पॉइंट 0 3 0.
जब ये पास होगा होगा थ्रू द पॉइंट 030, तो हमें मिलेगा प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मीन्स वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, मीन्स हमें मिलेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले हम ज़ेड एक्स प्लेन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन और ज़ेड एक्स प्लेन आपस में पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन इज, द इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन इज, क्या होगी इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन? मस्ट बी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो ZOX प्लेन है, x एक्सिस और z एक्सिस से बन रहा है, लिहाजा y एक्सिस उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0। सो y का वैल्यू क्या बनेगा वहां पे? दैट इज एक्चुअली 0। सो इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन मस्ट बी y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ XO प्लेन क्या होगा? XOY प्लेन क्या होगा? यस, z इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ YOZ प्लेन x equal to 0. Equation of ZOX plane, that is y is equal to 0. So the equation of ZOX plane is y is equal to 0. Implies this can be further written as, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 into x plus 1 into y plus 0 into z is equal to 0. Right? क्योंकि x और z वहां पे अवेलेबल नहीं था, हमने उनके कोफिशिएंट्स लिए हैं 0. सो 0 into x plus 1 into y plus 0 into z is equal to 0. That is of the form ax plus by plus cz plus d, क्योंकि प्लस 0 भी यहां पे लिख सकते हैं, प्लस 0 भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स इक्वल टू 0. सो बन गई ये किस फॉर्म में? ax plus by plus cz plus d is equal to 0. लेकिन कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या होते हैं? इसके एटीट्यूड नंबर्स। तो इसके एटीट्यूड नंबर सब क्या बनेंगे? 0 1 0. The attitude numbers, the attitude numbers of this plane are, the attitude numbers of this plane are, तो इस प्लेन के एटीट्यूड नंबर क्या बन रहे हैं? ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ 0 1 0. इज दैट क्लियर? तो जब इसके एटीट्यूड नंबर 0 1 0 हैं, अब दे रखा है कि गिवन प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो इस ZOX प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन आपस में पैरेलल है। तो जब रिक्वायर्ड प्लेन और ZOX आपस में पैरेलल है, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम और प्रोपोर्शनल एटीट्यूड नंबर्स, तो रिक्वायर्ड प्लेन के भी एटीट्यूड नंबर यही बनेंगे 0 1 0. बट द रिक्वायर्ड प्लेन, but the required plane is parallel to, इसका नाम यहां पे सपोज फर्स्ट रखेंगे, but the required plane is parallel to plane first, but the required plane is parallel to plane first, therefore attitude numbers of required plane are, attitude numbers of required plane are, तो required plane के attitude numbers भी यही बनेंगे, ordered 3 tuple of 0 1 0. Is that clear? तो मिले हमें required plane के attitude numbers, यानी A, B and C. अब ये required plane जो है ये x एक्सिस को मीट कर रहा है, ये x इंटरसेप्ट कट कर रहा है 3 along, it intersects y axis at a distance of 3 units from the origin. Now it is given that, the required plane cut off intercept, now it is given that the required plane cut off intercept 3 along y axis. रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 3. मीन्स ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को नहीं, z एक्सिस को नहीं, इसलिए ये किस पॉइंट में जहां पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट इज
it passes through the point, that is it passes through the point. तो ये किस पॉइंट में से पास होगा? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 0. तो इसके एटीट्यूड नंबर 010 है, ये पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट 030. तो देयरफॉर इट्स इक्वेशन इन वन पॉइंट फॉर्म इज, देयरफॉर इट्स इक्वेशन in 1 point form is. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी इन 1 point form? क्या होती है? a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 and that's equal to 0, right? This can be further written as implies. Now a is the first attitude number. What is that? 0. So 0 into x minus x1, so x minus x1 is the x coordinate of the point through which it passes, that is 0. So 0 plus b is the second attitude number. What is that? 1. So 1 into y minus y1. y1 is the y coordinate of the point through which it passes. What is that? 3. So y minus 3 plus c, the third attitude number, that is 0. So 0 into z minus z1. z1 is the z coordinate of the point through which it passes and that is 0, is equal to 0. So implies 0 into anything 0, 0 into anything 0. तो यहाँ पे क्या बचेगा? y minus 3 into 1, that is y minus 3 is equal to 0, implies y is equal to 3. तो क्या रहेगी उस प्लेन की इक्वेशन which is parallel to ZOX plane and cut off intercept 3 on y-axis must be y is equal to 3, which is the equation of required plane. तो required plane की इक्वेशन बनेगी y is equal to 3. मीन्स उस प्लेन की इक्वेशन जो ZOX प्लेन यानी ZOX प्लेन और वो प्लेन आपस में पैरेलल हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी? और वो रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो कट कर रहा है इंटरसेप्ट 3 अलोंग y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन बनेगी y is equal to 3. Is that clear? So that was all about question number 8 of this exercise. Now there are some more questions of this exercise and that we will do in the next class.